So I had been to a very, very wonderful temple today, as you can guess from this stika that I got. I was never aware of this temple right in Mumbai. Uh, it's called Sannyas Ashram Temple. It's in Ville Parle. And uh, सारे देवियों सारे सबका इतना विशाल मंदिर है, सभी वहाँ पे है. And it was a very, very wonderful experience. And just being there was so good. And मेरे पास अभी एक छोटा सा हारमोनियम है, आप लोगों ने शायद कभी देखा है मुझे बजाते हुए. इट्स अ स्मॉल पोर्टेबल कॉल्ड डॉल्फिन और डॉल्फिन हारमोनियम. तो उसी के लेकर गए थे और the sound acoustics was so nice that I think we would like to have some bhajans, kirtans there periodically, right in that temple. So I've spoke to the Swamiji there, and hopefully we'll start. So it was a wonderful trip this afternoon. और actually पता नहीं ये साल में यही चल रहा है मेरे साथ. By itself, spontaneously, I'm ending up in temples and places of worship almost by magic. Some of you who have been with me on these trips already know, but यही एक ही मतलब ever since we came back from the USA in second week of January, वहाँ से आज तक गिनूँ तो पता नहीं कहाँ की यात्रा जो है, पिलग्रिमेज अपने आप होते ही जा रही है, हो ही गई. All the way from started with Dattatreya Mandir in Kutch in Bhuj to Varanasi, Kashi Vishwanath, and Prayagraj, Triveni, and then Ayodhya, Ram Janmabhoomi, and then where were we? Varanasi and Mathura and Nandgaon and Barsana and Mathura, Vrindavan, all this happening. And it's just an intention that I had put out in my mind to the universe sometime in the November, December of last year, कि जहाँ जहाँ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उस सेलिब्रेशन का जो मूल स्थान है वहाँ पे उस दिन पे जाना है. That's all. I just put it out there. And since then, starting with Christmas in London and Uttarayan also in a big kite festival, to Mahashivratri in Kashi Vishwanath, and then everything just falling into place. I've also been to Om Swami's ashram in Chandigarh also in just within these last 2-3 months. And it's been just wonderful, one holy place after the other. And ant mein, of course, every place is holy, but there is no place which is not holy. मुझे एक सूफी संत की कहानी एक छोटी सी याद आ रही है कि वो Rumi was lying down in a mosque, and someone scolded him that your feet are towards Mecca, so you better turn around and face somewhere else. And he said, oh, I don't mind at all. आप जहाँ चाहे मुझे फिरा दीजिए. Just make sure that God is not in that direction, wherever you turn me and leave my feet. Just make sure there is no God in that place. वहाँ पे मुझे मोड़ के छोड़ सकते हैं आप.
So that way. So knowing that we are in everywhere is the same. Everywhere is the same. I really, ये टेक्नोलॉजी का जो ये अच्छा भी है कि आप सब हम एक साथ में एक जगह पे हम सुन रहे एक दूसरे को, देख पा रहे हैं, सुन तो नहीं पा रहे एक्चुअली एक दूसरों को. बट आई विश आई कुड रियली just be in that presence of all of you, क्योंकि जो एक प्रेजेंस में जो बीइंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, उसमें जो एक आनंद है, एक माहौल जो बनता है, वो हम वर्चुअली बना रहे हैं. बट इट वुड बी वंडरफुल टू बी टुगेदर ऑल्सो. Great. So we talked about this a couple of times on different forum, but since pilgrimages are on in my space right now, let me start with a question for all of you. Ki what is the difference between a pilgrimage and a vacation? Those who have heard this question and heard it over and over and over, उससे अभी तक बोर हो गए होंगे, but new people, new questions, new answers. And even if you heard this question before, think about it again and post in the chat window. What is the difference between a pilgrimage and a vacation? So while you are typing, if we can have one song. आई होप आप सबने ये क्वेश्चन ठीक से सुना है. और संजीव जी पूछ रहे हैं कि यात्रा और वेकेशन में क्या फर्क है. तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, उनको बताइए कि आपका क्या मानना है इस बारे में. देखिए, सिमिलैरिटीज तो सबको मालूम है, उसकी वो तो सबको पता है. हम घर को छोड़कर कहीं जाते हैं, वहाँ भी कुछ ट्रेन या प्लेन की बुकिंग करनी पड़ती है, रहने की जगह का बंदोबस्त करना है, खाने पीने का इंतज़ाम करना है. तो पिलग्रिमेज हो या वेकेशन, यात्रा हो या सफ़र, दोनों में ये होता ही है. लेकिन फ़र्क क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ. राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय. श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय. श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय.
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय Okay, let's see. One is pilgrimage for happiness, vacation for enjoyment. True. Although we can also enjoy a pilgrimage and find happiness in a vacation, possible. Vacation, we enjoy the outside world, whereas pilgrimage, we are with Sattvic Bhava, we are with ourselves, that inner journey, Sharad says, very nice. Vacation, enjoying for self-pleasure, yatra being a God, search of God. Samir says, very nice, I guess, about the bhajan. I don't know, probably the difference of intention. Pilgrimage can be a vacation and vacation can be a pilgrimage. It may not be a pilgrimage. Vacation, go because I'm happy. Okay. Mindset. कौन सा mindset? Chandrahas. What mindset? One is inward, other is outward. Yes, indeed. We go to receive blessings, we go to relax. Suyog. Vacation, we are not connected to spirituality. Oh, Jayesh is very close to Sannyas Ashram. तो जयेश जरूर मिलेंगे उधर, भजन कीर्तन करेंगे, तैयार हो जाओ. Okay, very nice. Mulk Raj says vacation, we normally go to vacate the space. And acha, theek hai, good, good, very beautiful. Any more? Chalo, sab log share karo. Everybody has been on a vacation. Everybody has been on a pilgrimage. फर्क क्या था? और आगे भी क्या फर्क हो सकता है? भीतर की यात्रा, भीतर की यात्रा. बाहर भी तो जाते हैं, पिलग्रिमेज भी तो बाहर निकल पड़ते हैं. हमें भी टिकट विकेट बुक करके ट्रेन में गए थे. एक, हाँ, वाराणसी वाला फ्लाइट से गए थे या ट्रेन में गए थे. आज अभी उबर में चले गए संन्यास आश्रम. जयेश एम यानी विच जयेश इज इट? नियर संन्यास आश्रम. I never knew such a beautiful temple is there so close by. It's beautiful, beautiful, beautiful. Pilgrimage for self-realization, vacation for world realization. Journey is continuous, vacation is rest. Okay, very nice. So, ये सारी बातें जो आपने कही है वो सच है, अच्छी है. लेकिन एक मूल मूल पे अगर जाए, मूल तत्व, मूल प्रश्न या मूल फर्क जो है, व्हाट इज द की, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस?
व्हाट इज दैट एसेंस? आप कभी भी वैकेशन के बारे में सोचो, आपका जो वैकेशन है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एजेंडा रहता है कि यहाँ पहुँचना है, माथेरन जाएंगे तो मंकी ट्री पॉइंट, वन ट्री हिल, ये है वो है, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, ये वो आपका पूरा एजेंडा है। और उसे लेकर आप निकल पड़े हो। और इतने सारे पैसे खर्चे हैं तो ठीक से खाना मिल रहा है कि नहीं, ठीक से सुविधाएं है कि नहीं, यही, दिस इज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड स्टोरी दैट इज गोइंग ऑन। बैगिट खलीक, ये क्या है भैया? अच्छा, जो सो ये दिमाग में रहता है कि व्हाट to, we are basically the focus and the intention, or the attention is on what can I get out of this vacation for myself, for whoever is with me. इसमें से हमें क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा? अच्छी जगह देखने को मिलेगी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, nothing wrong, good food, good places to see, comfortable places to sleep in, etc etc, क्या मिलेगा? लेकिन attention on is on what can we get. And the pilgrimage, you have, it is giving up your giving up your luxuries, giving up yourself, giving up of your identity, your, जब जब हम जब हम एक मंदिर की ओर जा रहे थे, इट वॉज लिटरली अ सी ऑफ पीपल, लिटरली अ सी ऑफ पीपल, यू आर जस्ट कैरिड along with the flow and the thousands of people, you completely lose yourself, just the energy of the people, राधे राधे चल रहा है और लोग जा रहे हैं, and you are just caught up in this energy, this wave, and literally you disappear, the identity disappears, and the focus is what can I give, what can I give. So, and the interesting thing that I have experienced in the last, I mean, every pilgrimage, many years, but especially, I don't know what it is these last 2-3 months, ये जो माहौल चल रहा है एक के बाद एक, where we, what, the focus was not on getting anything, even darshan or whatever, all those things were never the agenda, because ultimately, having been through all this knowledge with Guruji and with so many other sources, we know कि जो है नहीं, ऐसा नहीं है when we go on a pilgrimage, because we are already in meditation, we are already into lovingness, so there is nothing to get as such, so all that remains is to give. और उस गिविंगनेस में क्या क्या नहीं मिला है हमें, it is just marvelous, miraculous. Just one small example is, जो वृंदावन में गए थे हम लोग, तो वृंदावन, I don't know how many people know, होली goes on for weeks and weeks, like a 1 month होली चलती है, it's not a one day thing like हम सोच रही होती है, अपनी अपनी उसकी फ्लेवर होती है होली की, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली, रेती की होली, केसरिया की होली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देर आर लिटरली
many different types of होली. और जिस दिन हम गए थे उधर, उस दिन ऑलरेडी जो फूलों वाली होली है वो ऑलरेडी हो चुकी थी. So we had no idea that we will be able to see a फूलों वाली होली or experience a फूलों वाली होली. It was not on the cards. तो ठीक है, this is what it was and we had already knew this. पता था कि नहीं है, रंगों वाली होली के लिए होंगे लेकिन फूलों वाली होली नहीं होगी. तो but we took one small boat along the Yamuna river in Vrindavan. एंड एक घाट है वहाँ पे, केसी घाट करके, केशी घाट. तो केशी घाट पे हम जा रहे थे और कुछ ही समय बाद हमने देखा कि there's on one of the ghats there's a lot of music and lot of dancing and all that going on. तो वहाँ से जब बोट गुजरी तो सीधे वहाँ पे नज़र आया एक क्या खेल रहे लोग, फूलों की होली खेल रहे थे. Thousands of flowers, thousands, I don't know, can't count, millions of petals just being thrown, and they were just in a complete state of joyousness. This Pulon ki Holi was being celebrated, and I was like, wow, ये हमने सोचा भी नहीं था कि हमने देखने को मिलेगी, लेकिन ये यही नज़ारा सामने आ गया. And so and as we were passing the boat, the माझी जो था उसने अपने आप पता नहीं क्या उसको सूझा, उसने वो जो स्टेज था उसके पास में बोट जाके खड़ी कर दी. एंड सडनली बिफोर वी नो इट द बोट इज ओनली 2 boats अवे फ्रॉम द स्टेज. हमारे और स्टेज के बीच में एक और बोट थी, फिर एक और बोट, और फिर सीधा डायरेक्ट स्टेज. स्टेज के बाद जो ऑडियंस था, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. इफ यू हैड कम फ्रॉम द स्ट्रीट साइड, there is no way we could go through the crowd and reach the stage, no way. But we were on the river side. So river side we are only 2 boats away, and this is all just divine play, you know, कि वहाँ पहुँच गए हम. And one more divine play happened. This little flower girl whose name also turned out to be Tulsi just landed up in our boat from there, from the land, from this ghat, and said, and just started taking us each one by the hand, one after the other. Suddenly we are walking, hopping boats, hop the first boat, hop the second boat, and then just pulled us up to the stage. And suddenly we are all on the stage with this showering of flowers, this burst of petals and flowers. I think I'll see if I can share 1 or 2 pictures or a video of it, or if anyone has it handy who was there, maybe Jennifer ji or somebody can, or maybe you may not be able to share the screen. Okay, let me see if I can do it. I'll see if I can do it before we close. But before we knew it, we are in the mid, not only we are participating in this Phulo Wali Holi, and we are right on the stage, and they welcomed us. There was nothing, and we are just simply enjoying ourselves. What message I'm giving is that in that state of not wanting to get anything, vacation पे हमारा ध्यान ज़्यादातर वसूली पे होता है. हमने इतना खर्चा किया है, उसके सामने जो हमने खर्चा किया उसके सामने what we have paid was nothing, you know, and we are only there to give. And out of that state of giving, what we were receiving was beyond. There was no way कितने भी पैसे देकर या कितना भी अरेंज करके या लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दैट कि हम उस जगह पर उस वक्त पर हम पहुंच पाते, because the crowds were so heavy and so on. It would just not have worked, but it's just divine grace. We just ended up there and we played this Phulo Wali Holi, and ये सिलसिला चलता ही रहा in every place that we went to, whether it was the तटिया स्थान का जो आश्रम है, हरिदास जी जो है तानसेन के जो गुरु थे, उनका एक आश्रम है अभी तक वहाँ पे परंपरागत तरीके से कायदे से शास्त्रीय संगीत के द्वारा जो भक्ति होती है वो चलता है. और वहाँ पहुँचकर जैसे जन्नत में पहुँच गए वैसा ही अनुभव हुआ. उतनी शांति. They don't, it's a place where they do not use electricity at all.
There is no running water. There no lights from bulbs, fans, nothing. It's all lit by diyas. Even the sangeet jo chalta hai, there is not a single mic or a speaker. It is all just live without mic. You're hearing them directly as it is. And the floor of that place also is this soft sand, the softest sand that I've ever experienced in my life. You know, हम Caribbean गए हैं on cruises and things like that in Cancun in Mexico. The Caribbean sea is very beautiful. It's a very beautiful sight. And there also, I remember that sand is, you know, I remember a walk in the moonlight on that sand in the beach, this soft sand under the feet. And that same feeling I got in this Tastaan, in this ashram, this, जैसे अब मलमल पे चल रहे हो वैसी रेत. And they say that they clean it by sieves and all. The people who live there clean it every single day to make sure कि कोई भी बड़े बड़े रचकन या पत्थर आग नहीं गए अंदर, to keep it that soft. Because the trust and faith is that राधा कृष्ण खुद पधारते हैं वहां पर. So the sand has to be just right and just soft as can be. But we experienced all that. So when we are not out to get actually, you know, then the blessings, we open up to blessings and the blessings are showered upon us. So to me, I think that is the biggest difference between the pilgrimage and the vacation. That in the vacation we are, हमें हमारा ध्यान उस पर है कि हम क्या पा सकते हैं, और एक यात्रा वो जगह है, वैसा सफ़र है जहाँ हमारा ध्यान उस पर है कि हम दे क्या सकते हैं. तो होली खेलते वक्त भी यू नो हम तो बस जो भी सामने आया उसके साथ गाने शुरू हो जाते थे. डफली थी और गाने वाले थे, तो सब जहाँ जहाँ से लोग थे सबको जो भी आसपास था उनके साथ ये भजन और कीर्तन शुरू हो जाता था, और वी वर जस्ट सिंपली इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस. द अदर पॉइंट इज कि ये जो अगर फर्क खास जो है वो देने और लेने का है, तो ये फर्क कहाँ से आता है? इट इज सिंपली अ चॉइस जो हम वी मेक दिस चॉइस कि यहाँ पे there is nothing that I have to get. I'm only there to give. It's a choice that we make जब हम यात्रा पे जाते हैं. So question for you is, for us all is, क्या हम ये choice हर जगह हर पल कर सकते हैं क्या? Is there anything that stops us from making that choice in every moment, in every place? Anything stops us? Yes or no? क्या लगता है? Yes or no? Chat window is open. Yes or no? Can we make a decision, a choice to be? Is there anything that stops us from making this choice to start with giving? See, like I said, in this pilgrimage, what we got is beyond calculation. But we were not there to get. We were there only to give. So anything stops us from being in that state of giving? Nothing stops us. I'm sure all of you will agree कि ये हमारे पर है. जहाँ भी जाए हम देने के भावना से जाएं, देने की भावना से रहें. So one thing I would like all of us to take away from today's gathering of so many beautiful people. So many beautiful people, all of you in one place. One thing we can all take away from here is to again and again
again and again bring ourselves to this choice. No matter where we go, no matter where we are, no matter which location, even in your own home, you can make the choice that I am here to give. I am here to give. I am not here to get. ये choice हम हर पल हर जगह ले सकते हैं, कर सकते हैं. And it is such a simple choice. Such a simple choice. Why? Because this is your true nature actually. This is your true nature, whether we remember or not, whether we realize or not. This is your true nature. तो उस ट्रू नेचर के साथ वाला एक चॉइस जो है, वो एक चॉइस हम हर जगह कर सकते हैं. और अगर ये चॉइस किया तो हर जगह, हर पल, हर सफर क्या बन जाता है? What does it become? It becomes a what? Every place. When you are in a state of giving, every place becomes a pilgrimage. Every place becomes a pilgrimage. Every spot becomes a temple. Every location is a temple because you are you, and you are that Shiva in that temple, ready to give. And only there to give, to give, to give, to give, to give. See, what we give at the temples, the donations, this, that, and the other, is for the people who are taking care of those places. You're not giving that to the divine. Do you really think that the divine, who is the creator of all that there is, which is the innermost you, really has a need for some coconuts or anything like that? It is for them. So that you can give. But know that the ultimate giver is that divine. And you, when you make that choice to be the giver rather than the taker, तभी आप अपना जो असली स्थान है वो ग्रहण करते हैं. So yes, with that we can express our gratitude for this moment and for the moments to come. Yes, so सभी लोग एक शॉर्ट एसाई करते हैं, शॉर्ट पॉज लेते हैं और साथ में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मेरा पिछला 1.5 घंटा सबसे बेहतरीन 1.5 घंटा था. धन्यवाद उस चीज के लिए जो मेरे मुताबिक हुई. धन्यवाद उस चीज के लिए जो मेरे मुताबिक नहीं हुई. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैं उन सारी यादों से मुक्त हूँ जो मुझे डर या IDFAR का एहसास दिलाता था. और आज मुझे ज्ञान है कि मैं शून्य हूँ, कुछ नहीं हूँ, और इसी तरीके से मैं ऑपरेट कर रही हूँ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैं सभी क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो या धन हो या संबंध हो, मैं उन सभी एरिया में प्रचुरता में रह रही हूँ. और जागृति के लिए मैं 4 मंत्र में रहती हूँ. आई लव यू, सॉरी, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मेरा अगला 1.5 घंटा सबसे बहुत बढ़िया 1.5 घंटा है और मैं हर क्षण उसे पूरी तरीके से जी रही हूँ. तो इस तरीके हम एक शॉर्ट एसाई करते हैं और उसके साथ आज के जो भी हमारे मार्च या अप्रैल के जो भी हमारे प्रोग्राम्स है उसका मैं आपको बता रही हूँ. तो 11 से 14 तारीख को
स्कोप कैंप है ऑन ट्रूथफुलनेस कातर कड़क पुणे में। तो जो लोग कातर कड़क आना चाहते हैं स्कोप कैंप के लिए अप्रैल में, तो प्लीज स्कोप कैंप लिखिए चैट बॉक्स में और अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर, अगर आप नए हो तो अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स पे दे दीजिए। स्कोप कैंप कमिंग लिख सकते हो। और दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स है वो है बीएसटी भाव समाधि ट्रेनिंग, जो अप्रैल 7 से लेके अप्रैल 14 तक बीएसटी 1 बीएसटी 2 है। अगर उस ग्रुप और एक्वायरी चाहिए बीएसटी के लिए तो मैं चैट बॉक्स में सभी कुछ डालूंगी। जब संजीव जी शुरू करेंगे उसके बाद मैं चैट बॉक्स में सब ग्रुप्स लिंक ज्वाइन डालूंगी। चिल्ड्रन एसएसवाई समर प्रोग्राम है अपने बच्चों के लिए 8 साल से 12 साल के लिए तक, और वो है 23rd to 28 अप्रैल, 7th to 12th मई, 28 to 2nd जून। मैजिक ऑफ मैरिज है 1st मई to 4th मई। तो जिन लोगों को मैजिक ऑफ मैरिज करना है तो वो लोग MOM लिखेंगे और अपना नंबर देंगे। जिन लोगों को SSY करना है वो SSY लिखेंगे और अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में देंगे। So thank you. Over to you, Sanjivji. Welcome again. Sure. So, one short video of that Phoolon Ki Holi. Are you able to see the screen? Yes. Okay. So here is a little clip, 15 seconds of that while we were still in the boat. ग्रेट, देख लिया 15 सेकंड की एक झलक, दिखाई दिया नहीं दिखाई? हाँ Yes, हाँ yes. हाँ जी, Let's see. दिखाई दी। ओके ओके ग्रेट। सो दिस वाज व्हाइल वी वर स्टिल इन द बोट, और जब मैंने देखा तो लगा चलो कम से कम ये होली देखने को तो मिल गई। एंड on the आपकी आवाज stage कट हो and रही है, playing with all of the people. अच्छा, थोड़ा any नेटवर्क better? इशू है शायद। हाँ, Yeah, could be. So yeah, so while we were in the boat we said कि चलो देखने को तो मिल गई कम से कम, because we were in the boat, so there was no, सोचा भी नहीं कि हम वहां जा सकते हैं, because we were in the boat and this is happening on the land. So चलो, but okay, good enough, thank you thank you thank you करके बैठ गए, and before we know it we are going hopping boat to boat to boat, we are right on the stage in the middle of the whole celebration and simply enjoying. So main thing I wanted to say about this whole thing about pilgrimage is कि any place is a pilgrimage when you are in a state of giving. When you are in a state of love, any place is a pilgrimage. Even a vacation is a pilgrimage, even your home is a pilgrimage, your entire life is a pilgrimage. This whole life itself is a pilgrimage. You know, from the moment of your first birth till your last breath, everything is a pilgrimage, as long as you're aware of why you are here, which is to give, because what else is there, or hai kya? So and then going on a pilgrimage is just bonus, like cream and cherry on top of the cake. जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, जाना जरूरी भी नहीं है, कहाँ भी है वहीं यात्रा चल रही है. And so my invitation to all of you in today's session is to make that conscious choice. Ki, let me live my life for what I'm really here for, which is to give. And when your focus is on giving, then everything happens automatically. So everyone ready for that? To make that commitment to yourself? Yes, great, great. So yeah, wonderful. So
Yeah, and this BST I wanted to share a little bit also, since this is coming up. So I've also conducted BSTs in the past, and maybe I will again restart soon. But in the meantime, take this opportunity. BST में अगर जाने का आपको चांस मिल रहा है तो ज़रूर 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 ये वक्त निकाल कर अपने आप को इस जगह पे ले जाइए. वो क्या था वो गीत, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, टंग 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 टंग. मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. और वैसी ही जगह है दी स्कोप कैंप्स एंड द BST. ये वैसी जगह है जहां गम और खुशी का कोई फर्क ही नहीं है. लिविंग ऑन द एज, बीइंग ऑन द एज, दिस इज द प्लेस ऑफ लिविंग ऑन द एज. आज किसी ने एक कहानी भेजी थी मुझे अबाउट some story about some boys who did some prank with some goats. They found 3 goats and they put number 1, number 2 and number 4 on the goats and let them loose in the school, and everybody is worrying about ye number 3 kahan hai. And so the moral of the story being that we are always looking for what is not there rather than enjoying what is there. And this may be true, but ये जो स्टोरीज होती है ना, यू नो, आई एम लिटरली टायर्ड ऑफ देम. बिकॉज इतनी क्या बोलते हैं, गैग मी विथ अ स्पून, शुगर स्वीट, कंट्राइव्ड, मेड अप, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज होती है. दे आर ऑल मेड अप स्टोरीज. ये कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको ये बकरे मिले और स्कूल में डाला, कुछ वैसा हुआ नहीं है. ये किसी ने बनाई है बात, टू प्रूव अ पॉइंट, टू मेक अ पॉइंट. And I'm not saying that the point is bad or wrong or not good or anything like that, but it actually misses the point. गम और खुशी में फर्क ना होना, that is the state of samadhi, that is the state of bliss, where the coin is neither on heads nor on tails, but is capable and potential to go on this side or that. Both are possible. When the coin is on the edge, that is the state of balance, that is the state of equanimity. ये जो सारी कहानियां जो होती है, वेल इंटेंशनड, अच्छे लोग हैं, अच्छे इरादे भी अच्छे हैं, चलो मैं मानता हूं, लेकिन वो इस कॉइन को एक तरफ ले जाना चाहते हैं. समथिंग अबाउट गुड गुड गुड. इफ आई रिमेंबर वन कोट बाय गुरुजी सेइंग, you know, good people get together and create a mess. That is the problem with the world. He has said that very clearly. So it is where the magic is on the edge, in the balance. When you go down one slope or the other, one side or the other, that's the slippery slide, and the slippery slide is when we go into chaos and we get into a mess. तो ये कहानियां जो होती है, जैसे you know, it's always, oh, there is one villain and he was a very mean person and he was killing a lot of people, and one hero came and he killed the villain. Okay, and now the moral of the story is that good prevails over evil. Good wins over evil. Good always wins over evil. That's the moral of this particular story. But imagine वो story थोड़ा extend करते हैं उसको. In the new story, new second version of the story, वो विलन है जो ये कुछ कर रहे हैं, and then you know, मस्ती हो रही है, and then some people he's killing, and this hero comes and kills the villain. But then part 2 of the story, the son of the villain is very angry that मेरे पिताजी को ये hero ने मार दिया, and he now comes and kills even more people than his father ever killed.
So what if the story ended there? What would be the moral of the story? Evil prevails over good, because that's what happened. So point is, stories don't prove anything. Stories don't mean anything. They don't prove anything. The only thing we have at our disposal is our own direct experience. और वहाँ जब हम झांक के देखते हैं, तो reality is everything. Reality is the volcanoes and the lava, and it is also the serene and beautiful lake and cool waters of the rivers. दोनों है, दोनों का समन्वय, दोनों का बैलेंस, दोनों में ओकेनेस, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां. That is the state of samadhi. So being in that state all the time, as long as possible, neither swayed by some temporary joy or happiness, nor pulled down by some temporary downturn. That state of balance is the state of bliss. So BST is one very, very, very powerful way to take that place in your life, to find that spot in your life, and then plant yourself there and stay there. So jump on these opportunities. The scope camp, the BST, jump on these opportunities to practice what? Practice being on the edge. Where the magic is. That is where the magic is. So please, everyone, take part in that. For those of you who may be into Kirtan, there is also on the 6th and 7th Kirtan. Put a message on the chat box with your name and number, and we'll connect you with how to participate in that, in the Kirtan. So one more experience I wanted to share is about Kirtan. I discovered, with SSY, Kirtan is on Saturday and Sunday. It's a 2-day event at a Vedic farm near Mumbai in Palgad, in Palgad district. So it's on overnight at the Nischal farm, Vedic farm, Vedic village, actually it's called NVV. So just put your name and number and I'll send you the details and you can join us. Can you please repeat the dates, Sanjivji? It's 6th and 7th. Let me just make sure. Yeah, April 6th to 7th, Saturday and Sunday. Overnight at the NBV. It is the... I've written in the chat box. Is that right? Nilachal Vedic Village. Okay. Let me just, in fact, I'll just post the link to the form that you have to fill to participate. I'll just post that link. You can just click on that link and join in. Just give me 1 second. So Sanjivji, are people welcome online also? People are asking if it is only offline or online option is also available. It's offline. All right. और वंदना जी, अगर आपने अपना नंबर लिखा है कीर्तन के लिए तो प्लीज लिखिए कीर्तन, that your name, number and kirtan, so that we can understand it is for kirtan. Thank you. So Kirtan के बारे में, Kirtan is something I discovered just a few months ago, maybe 5 or 6 months ago. SSY में हमेशा हम
भजन गाते हैं. भजन और कीर्तन में there are some differences which we won't get into right now. But the moment I discovered the beauty of kirtan 6 months ago on YouTube and listening to them, I was like, oh my goodness, this is so beautiful. When will I get a chance to be with some of these great kirtanyas, sitting with them and singing live with them, next to them? And this has been just something in the back of my mind for the last couple of months. And guess what happened in Vrindavan? One of the top kirtanyas, her name is Achyuta Gopi. She's a African lady from probably from the US, I'm not sure. But she's the only kirtanya who has been nominated for an Emmy Award. So she's a world-class kirtan singer, and she happened to be in Vrindavan, and she happened to be singing and conducting a kirtan during the time that we were there, and we happened to find out about it, and we happened to go there just before we were leaving, and we happened to go when there was not too many people, and we happened to sit not close to her but right next to her and had the kirtan. So this is one other just blessing, just showering on us in this place. So here is one of the kirtans which I really love. कीर्तन जो है महामंत्र का कीर्तन स्पेशली, व्हाट दे से इज कि जो कलयुग है, कलयुग में जो कृष्ण का रूप है, स्वरूप है, इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म. उनका साक्षात अवतार फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा, वो सिर्फ उनके नाम में है. जब भी कोई भी उनका नाम लेता है तो वो उस शब्द में Krishna becomes present. So Krishna is not in form but in name in Kali Yuga. And when you sing a kirtan, when you sing the Mahamantra, हाँ, कलयुग केवल नाम अधर, अधर यानी होठ या on the tongue. When the name is on the tongue, Krishna becomes present, and that's the beauty of kirtan. So you're all on mute, but you can all sing with me. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. And at this point, of course, आप लोग गाते, you would repeat the line. And to me, जो कीर्तन का जो जादू है, वो ये समूह गाने में है. जब सभी मिलकर साथ गाते हैं. टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ी अब तक कि हम सब साथ में गा सके. एक दिन वो भी हो जाएगा. लेकिन बट थिंक अबाउट इट, ये जो साथ में गाने का जो आवाज़ होता है समूह में, आपने कभी भी सुना होगा तो कितना मधुर होता है. आपने देखा है जब साथ में गाते हैं सब, इट इज़ सो स्वीट एंड इट इज़ so much in tune. I guarantee you कि मान लो 100 लोग, हम 150 200 जो भी हैं, अगर मैं हर एक के सामने एक माइक रख दूं और ये ट्यून गाने को कहूँगा अभी, it's not a very easy tune, but just listen. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. तो हर एक individually, supposing I asked each one of you to sing, it will be okay. Like some of you are good singers, you may sing well. Some of you bathroom singers not so well, and lot of you, many of you who are not at all into singing, हो सकता है सुर इधर उधर हो जाए, ट्यून का भी कोई वो ना हो, और ऐसे ही गा लेंगे आप. तो इंडिविजुअली आप गाते हैं तब लगेगा कि यार ये तो मिलकर क्या गाएंगे, कैसे गाएंगे, क्योंकि क्वालिटी इज नॉट सो हाई. बट द मैजिक इज कि व्हेन यू डू हियर द कोरस, यू जस्ट नोटिस, go on YouTube and listen to some kirtan, and at mind you, the chorus जो गाते हैं वो भी आपकी तरह मेरी तरह रैंडम लोग हैं जिनको कोई संगीत का कोई खास ट्रेनिंग या वैसा नहीं है. फिर भी जब सब मिलकर गाते हैं उतना मधुर होता है, उतना स्वीट होता है, उतना सुर में होता है, उतना पक्का होता है वो गान कि it is beyond imagination. How does it happen? It is almost, you can say, it's a miracle happening every moment. How are random people who don't know how to sing singing so beautifully together? It cannot happen without this grace descending, the divine making its presence known and expressing that divine energy through each of our tongues and our voices. That is the beauty of kirtan. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. And I've heard so many beautiful kirtans in the last few months and learned so many new kirtans. But there was one which I discovered last week, which to me is beyond words, beyond description. So I will post the link to that kirtan also before we are done today, and everyone please listen to it. I know that when I first heard it, I practically didn't sleep that night because वो headphone पे लगाया हुआ था, and there was no way to not keep on listening to that. It was an all-nighter that first time. So make use of this one. So yeah, join us for Saturday, Sunday Kirtan program if you are anywhere near Mumbai. And
available. So, सुनी सुनी सी दास्तां जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक है आज का, सुनी सुनी सी दास्तां। तो ये जो भी मैं कह रहा हूं आज, ये सुना हुआ है, आई एम श्योर सभी ने सुना हुआ है। ये सुनी सुनी सी दास्तां है, कहीं ना कहीं सुनी हुई है, ये बातें नई नहीं है। क्या था वो? ये बातें नई पुरानी आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये बातें। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, ये सारी बातें जो है सुनी सुनी सी है, which is why I made that the topic of today. ये सुनी सुनी दास्तान है. And it is also a beautiful line in one song which I sort of loved for many, many years. I always loved this song, but I recently rediscovered it. Any guesses on which song has this line? Suni Suni Si Dastaan? Can I guess? Uh, I don't know. I don't know what is there I in was your just mind. writing. I was about to write. okay, Okay, okay. I'll just Go ahead, go ahead. कौन सा गाना है जिसमें ये लाइन है? निकाह का हवा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां। I was just going to tell you to sing that song. क्योंकि वो सॉन्ग पे से तो ये टॉपिक आया है, और वो टॉपिक या और वो भी उस वक्त मॉडिफाइड वर्जन ये होगा कि ये जूम भी है जवा जवा, ये सत्संग भी है रवा रवा, गाके आपकी आवाज तो सुना रहा है संजीव भैया सुनी सुनी सी दास्तां। तो पर आप गाइए प्लीज, वो गाइए 2 लाइन। यस यस 2 लाइन नहीं, ये गाना तो हम पूरा गाएंगे, डोंट वरी। in fact and why I'm saying I wanted to talk about this song is that as we just happened to do a recording. I will post, how will I post? I'll send you the song on WhatsApp. Julie, you can send it to everyone. So my sister Lopa, we were just hanging around, and ये गाना पता नहीं हारमोनियम पे शुरू हो गया, and she started singing, and she was singing it so nicely. I immediately got my mic out and we recorded it just spontaneously, and it was so beautiful. And I've heard it, I always liked it, but this time when I heard it, I was paying much more attention to each word, each phrase. And it is just such a deep insight into life, into living, into loving, into what this whole thing is about. So we'll go into this song now. Chalo. फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है रवा रवा। You know what I'll do? I'll play the song which we recorded.
and we'll pause and listen to it properly. पर पहले And आप गा लीजिए ना, बहुत मजा आ रहा था। अच्छा चलो गा लेते। ओके ओके चलो ओके चलो एक अंतरा सही ओके। अरे यार क्या था। पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के। लहर लहर के होंठ पर वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है ये समा। सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है। करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा। सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया। हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का। हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा। सुनी सुनी सी दास्तां, फिजा भी है जवां जवां। हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा। सुनी सुनी सी दास्तां। वो सुपर। चलो गाते गाते पूरा गाना ही गा लिया। So this song somehow captures that edge of the coin state that I was referring to earlier. We'll see how that is, which is same idea as वो क्या था उस गाने में, गम में और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, that state of samadhi, that is what is being described here. So फजा भी है जवां जवां,
Okay, that's obvious enough. The atmosphere is so enticing, so beautiful. Hava bhi hai, ravaa ravaa. Ravaa ravaa is exciting. The whole ambiance is just so charged. You know, the atmosphere is always charged. It is always charged. The question is not whether hava ravaa ravaa hai ya nahi. The question is, are you available? Are you available to see it? That's the only thing that changes. Either you're available or you're not available. Either you're aware or you're not aware. That's all. Otherwise, the atmosphere is always, always, always. एक मिनट में आवाज बदलता हूँ. Always, always. एक मिनट. हाँ. ये always. Okay, now it's back. Okay, so I'll set it up better next time. वो अलग अलग आवाज में आएगा. Always, 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 always. The हवा जो है is always रवा रवा. It is always charged. It is always charged. It is always electric. It's completely electric. If you enter this moment, even right now, just enter this moment. Enter the moment. The moment is charged. The universe is there. You are conscious. You are present. You are aware. Every sound, every light, every, what is the word? Every photon is shimmering with light. Every moment is shimmering with light. So हवा तो है ही रवा रवा. आप अवेलेबल हो या नहीं, आप प्रेजेंट हो या नहीं, यही बदलता है. When you are present, when you become present, when you become aware, every moment is magic. Every. हर एक पल. मुझे ही चलाना पड़ेगा. ये मेरा वॉइस प्रोसेसर आज नहीं चल रहा है. बट आई every moment is magic. Every moment is magic. So सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां. Guys, आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो और मजा आएगा. I see some of you have your videos on and I love it. But if all of you turn on your videos, it'll be even more magical. So, सुनी सुनी सी दास्तां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां. So even though this song is speaking about this samadhi state, this state of equanimity, this state of balance, this place of magic, this edge of the coin state of being, the being aware of that divine that you are, it is speaking of those things which in a way are so rare. They are rare because the most of the time we are sleepwalking. We are sleepwalking through life, most of us. Or most of the time we are sleepwalking through life. So that is why it is unfamiliar. But otherwise, ये सुनी सुनी सी दास्तां है. You know, the funny thing is, मैंने पहले जब ये गीत सुना था, lot of many years ago, I just thought it was Suni Suni si Dastaan. I thought it was talking about some lonely दुख वाली कहानी. मैंने सोचा सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां. तो मैंने ज्यादा उसको वजन नहीं दिया था उस वक्त. But it was only last week that I realized it's Suni Suni si दास्तां. It happens. Another classic misunderstanding of words is by my dear Harsha. That song is there, no? आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है. तो वो जब वो गीत आया, she was maybe 8 or 10 years old, and she thought the words are आगे भी जाने ना दूं, पीछे भी जाने ना दूं. तू इधर ही रुक.
आगे भी जाने ना दूं, पीछे भी जाने ना दूं। तुझे मैं यहीं पकड़ के रखती हूँ। But I know she that's was in school. she was, yeah, she really was that little, and she never thought about it, and it was only when she was all grown up and then suddenly she realized it's आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू. So anyway, uh, so oh my god, पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के. My goodness, पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के. Somehow we have this preconception कि जो बाहर के काफिले हैं वो तो दूर ही होते हैं. दूर के काफिले, we have this mindset कि वो बाहर तो बाहर है, कहीं इधर नहीं है. इधर कुछ और है. बाहर चाहिए तो बाहर जाओ. वहां है, कश्मीर में है, या कोई वैली ऑफ फ्लावर्स में, या स्विट्जरलैंड में है, या कहीं है. उधर जाओ, इधर नहीं है. पुकारते हैं दूर से वो काफिले बाहर के. बट द पैराडॉक्स इज, दिस सॉन्ग इज जस्ट अ सीरीज ऑफ पैराडॉक्सेस. वो काफिले बाहर के बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार से. सो व्हेन यू आर इन दैट स्टेट ऑफ वेटिंग, नाउ सडनली दैट बाहर विच वॉज दूर से पुकार रहे थे वो यहीं है, पास में है. बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार से. लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियां, सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां. So बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है. Such a beautiful expression of life, how it is. You know, we are simultaneously in a state of waiting and in a state of fulfillment together. It is the edge of the coin state. बुझी भी है और बुझी नहीं भी है, ऐसी प्यास. बुझी भी है और नहीं भी बुझी है. This is the edge. This is the edge where the magic is. Because on either side, आप अगर बिल्कुल तृप्त है या बिल्कुल प्यासे है, then it's a dead state. There's nothing, the magic has already disappeared. But when you're on that edge, बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी ना दूर है ना पास है. ये गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, करार ना दूर है ना पास है. What is that? You know, this is how you would define or describe divinity. ना दूर है ना पास है, या दूर भी है और पास भी है, दोनों भी कह सकते हैं. ना दूर है ना पास है, दूर भी है पास भी है. So to capture this moment, and the last verse जो है, one more thing, this tune is so simple. राजन जी, अपने म्यूजिक गुरु इज ऑन द लाइन. राजन जी, कितना सिंपल ट्यून है. शुद्ध स्वरों में सी, एफ और जी कॉर्ड्स के सिवा कुछ यूज नहीं किया है. जस्ट सिंपल कॉर्ड, सिंपलेस्ट ट्यून यू कैन इमेजिन. और इतने सिंपल ट्यून में इतनी ब्यूटी भर दी है. इतना, it is not at all complicated. Anyone can sing this song because it is so easy, so simple. Even the antara, right? हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया,
Listen, this one line, if you get it, can change your life. This one line can change your life. Listen to me today. हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया. हमारे जो जीवन के पल जो जा रहे हैं, हर एक पल या तो पीछे कोई पल को ढूंढता या आगे वाले पल को ढूंढता हुआ चला गया. We are living our life either in the past or the future. So realizing this, knowing this, हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया. So you realize this, what do we have to do? इस पल जो ढूंढता फिर रहा है, ढूंढता चला जा रहा है, उसको जियो, इस पल को जियो. क्या था वो? हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. तो हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया. सो इस चक्रव्यूह में से अपने आप को बाहर निकालिए. उतना बड़ा चक्रव्यूह भी नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल देयर इज. Do not let it go wasted looking for something from the past or looking for something in the future. Allow life to simply unfold. This whole life is one big mystery unfolding itself moment to moment. ये unfolding जो हो रहा है, उस unfolding को होने दो. अपने आप हो रहा है वैसे भी. ये नेक्स्ट लाइन जो है, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का. फिराक यानी क्या? फिराक इज सेपरेशन. हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का. विसाल इज मिलन. तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट व्हेन आई थॉट अबाउट इट. हर एक पल विसाल और फिराक दोनों कैसे है? अगेन इट्स द एज ऑफ द कॉइन स्टेट. दोनों कैसे एक साथ? सो थिंक अबाउट इट. हर एक पल विसाल का, हर एक पल फिराक का. कैसे? एनी आइडियाज, एनी थॉट्स? हाँ पुरुषोत्तम जी. यू आर एबल टू अनम्यूट और नो? अच्छा, 1 मिनट. Now they can. ओके. हाँ, हर एक पल मिलन का भी है और विदाई का भी है. एक नया पल आ रहा है, उससे हम मिल रहे हैं, और जाने वाला पल छूट रहा है. हाँ, ब्यूटिफुल. वो या दैट इज ब्यूटिफुल. हाँ, हर एक पल, हर नए पल को हम मिल रहे और हर जाने वाले पल को हम गुड बाय भी कर रहे साथ में, साइमल्टेनियसली. ब्यूटिफुल, वेरी नाइस. वन मोर इंटरप्रिटेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट मीटिंग पीपल, लोगों को जब मिलते हैं, हम किसी को भी मिलते हैं तो लगता है कि ये मिलन का पल है. किसी को मिला है, हम मिल रहे हैं हम. Do you realize that in that moment in which you are meeting somebody, you are automatically and simultaneously separated from each and every other person in your life?
डू यू सी दैट? वो मिलन का पल ही विशाल का ही पल है. मामी શું કરે તું? So that moment of milan is also simultaneously a moment of separation from everything else. This is the beauty of life. It's how it is. ये एक जो एक नुआंस है, एक नाजुक सी बात है, उसे ये लाइन पढ़ने से पहले कभी मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था. And same thing with separation. No matter whom you think, oh, I'm separated from that person, I'm separated from that person. In that moment, you're also with yourself. Always you're with yourself. You're always with everything that's around you. So you are in that state of milan also. When were you ever not with yourself? You're always with yourself. So वो फिराक भी है, वो भी विशाल है. जो विशाल है वो भी फिराक है. हर एक पल विशाल का, हर एक पल फिराक का. Then third line, this whole stanza is just beautiful. हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान. Every moment is leaving a trace behind. एक निशान बना के जा रहा है. So think of this. The image I get is हम ये लाइफ जो हम जी रहे हैं, what is it? It's just simply creating ये जो निशान है. देखिए, निशान एक पेंटिंग पे एक पेंट से बनते हैं. वो या कुछ दीवार पे निशान बना दिया तो वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा सेमी परमानेंट निशान बन जाता है. आपने अगर किसी रेत में या सैंड में एक निशान बनाया तो वो लेस परमानेंट है. वो पानी के आते ही एक दो दिन में वो निशान चला जाएगा. पानी पे निशान बनाया तो वो और भी टेम्पररी है, जैसे बनाते ही मिट जाता है. हवा पे निशान बनाया तो वो जैसे बना ही नहीं. लेकिन ये जो लाइफ है इज नथिंग बट हम एक दूसरे के दिलों में कहीं ना कहीं छोटे छोटे निशान छोड़ते जा रहे हैं. Whoever you meet, you're creating a painting in the air, a painting in space, a painting in time. We are all artists, and our only job is to create a beautiful painting. A painting बनाना ही है. हर एक पल एक निशान छोड़ के जा ही रहा है, तो क्यों ना कुछ अच्छे निशान छोड़े, कुछ सुंदर निशान छोड़े. एक दूसरे के दिलों पर. जो भी आपके सामने आता है, जो भी आपके साथ है, that's all we are doing. We are painting. We are painting. We are simply painting these colors on in time and in space and in the hearts of people, the minds of people. Create beautiful paintings in the hearts and minds of people around you. चंदन जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके. हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान. सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां. फजा भी है जवां जवां, हवा भी है ravaa ravaa. Think of life as simply a canvas. ये जीवन एक कैनवस है. आपको रॉ मटेरियल दिया गया है, एक कैनवस दिया गया है.
ब्लैंक कैनवस है. रंग जो भी चाहे आपके पास मौजूद है. The raw material are the people around you. The raw material is the moments that you create. किस तरह का पेंटिंग बनाएंगे आप of your life? What kind of painting would you like to paint? And you are that artist. The brush is in your hands. Let me just share Lopa's version of this song. Okay, where is it? Where is it? Where is it? Okay, here it is. Okay. No, I'm not able to, okay, wait, I can do it from here. Let me see. Okay, meantime, I would like you all to share whatever you got from this song, from this evening. Chandan, if you were, I think you typed something, but maybe you can speak about it, whatever it was, while I'm looking for this song. Yes, you can unmute. Yes, Sanjeev, I typed that अभी सिर्फ सुनने का माहौल है, बोलने का नहीं. Yes, in a way that is also there. Yes, so true. Correct. And yes. यस, और कोई शेयर करना चाहेगा तो अनम्यूट कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए. Or any questions anyone has, that's also fine. If anyone has a question, I'll be glad to take that also. Any questions? Any realizations from today's song? आपको ये गाना कैसे छुआ और कैसे आपने ये गाने को पाया? Yes, Dipali ji, you can unmute. Yes. Sanjeev ji, thank you so much for wonderful satsang. ये जो गाने हैं वो तो बहुत बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे हमने सुना. और लेकिन वो जो होली का जो आपने बताया वो मेरा एक्चुअली ड्रीम है कि कभी मैं ऐसे होली में शामिल हो जाऊं. जैसे 5 तरह की होली होती है, मैंने सिर्फ सुना है. आपसे जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उस टीम में शामिल हो जाऊं. आपने बोला था 40 पीपल है आपके साथ, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम कंसिडर मी फॉर द सेम होली सेलिब्रेशन. Sure. Everybody is welcome. Yes. Thank you so much for wonderful sharing for holy celebration and Tirtha Kshetra Yatra. Correct. Sure.
Yes, yes. Thank you so much. Your voice is so amazing. Wonderful. It is just divine grace Yes. is, और आपसे and it, पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, लास्ट टाइम वो जो सेवक गेट टुगेदर था। right. जैसे मैं हमेशा ऑनलाइन देखती हूँ आपको, तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जैसे पर्सनली मिली वहाँ, तो उस दिन तो हमने स्वर्ग ही पा लिया। अच्छा अच्छा, हाँ Yes. हाँ, हम ब्यूटीफुल, लोग लोनावाला में मिले थे। यस यस, यस, तो प्लीज हमें मिलते रहिए ऑफलाइन, और श्योर श्योर हमें भी श्योर श्योर, आपसे जुड़ने का मौका दीजिए। जरूर जरूर जरूर. यस, Yeah, थैंक and like यू। I said, we have the kirtan session in this weekend, तो आ सकते हैं आप. यस, जय गुरुदेव संजीव जी। जय गुरुदेव प्रकाश जी, प्रकाशिए. बहुत सुंदर, मतलब इतने बढ़िया एक गाने में इतनी मतलब गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है बिल्कुल. कि बस एक दिमाग में एक मंथन चलने लग गया, मतलब मंथन मंथन मतलब कि किस मोड़ पे हम खड़े हैं। करेक्ट. और बस एक पास लंबा पास राइट. एक ठहराव, बहुत बड़ा बड़ा मतलब सुकून भरा, मतलब ये कितना शांति देने वाला ठहराव है ये, मतलब ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल. सुंदर, बहुत सुंदर आपने आज मतलब गहराई में लेके आज बहुत अच्छा लगा संजीव जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. ओके, ग्रेट. यस सुयोग जी, वीडियो ऑन कीजिए। यस धनंजय जी। या जय गुरुदेव। संजीव जी, सुनी सुनी सी दास्तां। हाँ, पहले गाना जैसे मैं कई बार ऐसे सुना है, लेकिन उसका जो म्यूजिक था ना, लेकिन राइट. इसके लिरिक्स कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन जब करेक्ट. आपने आज इसका ये चालू किया, हाँ हुआ सेशन, और उस फ्लो में मैं ऐसे रहा कि जैसे फ्लो में बहते जा रहा हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत टायर्डनेस भरा था, लेकिन ये जो 2 घंटे में मुझे एकदम एकदम एनर्जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मीरा जी की उस बात से सहमत हूँ। मीरा जी ने कहा कि बेटर देन ओरिजिनल। राइट. और अभी ब्यूटीफुल. जैसे प्रकाश जी ने कहा कि इस गाने में एक सुकून मिला, बहुत ऐसा लगा। राइट. थैंक यू, थैंक बढ़िया यू, थैंक यू। बढ़िया, मोस्ट वेलकम. बट जस्ट रिमेंबर कि जो सैडनेस का आपने जिक्र किया, वो उसको भी आप नकारे नहीं, उसको नकारना नहीं है. उस सैडनेस वाले पलों में भी वही चार्ज, वही ऊर्जा, वही सुकून, और अंत में वही आनंद. उन जो उदास वाले पल जो है, उसमें भी वही, उसी ऊर्जा से बनते हैं, उसी ऊर्जा से बने हुए हैं, और उसको हमें नकारना नहीं है. उसमें भी वही आनंद ले सकते हैं, क्योंकि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया. समझ रहे हैं सुयोग जी? यस। गम और खुशी में कोई फर्क नहीं है. आप उसमें भी है, इसमें भी है. और जब आपका नजरिया और आपका अवेयरनेस उस मैं की तरफ है, जो गम और खुशी दोनों को देख रहा है, दोनों को अनुभव हो रहा है, कर रहा है, तब उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है. सिंपली वी आर इन ब्लिस इन बोथ मोमेंट्स. दोनों पल में हम आनंद में ही आनंद में रह सकते हैं. क्योंकि हम इस तरह से जिएंगे कि जो गम वाले पल है उसको नकारते जाएं, तो ज्यादातर तो जीवन में हमें जो पसंद नहीं है वैसी चीजें होती ही रहती हैं. तो क्या ऐसे ही जिए हम? वैसा नहीं है. सो यू गॉट इट. जय गुरुदेव संजीव जी। जय गुरुदेव. तो फजा भी है जहाँ जहाँ बहुत अच्छा है आपने, और बहुत सालों से ये गाना मैं सुन रहा था। ठीक हाँ है, हाँ, और मेरा फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन या आज आपने इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, तो एक अलग नजरिया मिल गया सेम गाने को देखने। एग्जैक्टली थैंक यू। एग्जैक्टली. हाँ वही तो. और एक मिनट, आपका नाम इस पे नहीं आ रहा, क्या नाम है? सुयोग, सुयोग। सुयोग. हाँ, अपने अभी बात. सो मैं तो ये कहूंगा सुयोग जी कि ये नजरिया बदलना है. और अगर हम नजरिया बदलते हैं, तो सिर्फ ये गीत में नहीं,
जो भी हमारे सामने आती है, बातें, लोग, परिस्थितियां, वस्तुएं, नजरिया अगर हम बदलते हैं, दुनिया में देखिए सिर्फ 3 चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, 3 ही है। और व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में थोड़ा थोड़ा इधर उधर फर्क हो सकता है, लेकिन उन्हीं 3 बातों में अगर हम हमारा नजरिया बदल देते हैं कि ये सारे अनुभव करने वाली जो ऊर्जा है वो मैं हूं, और वही ऊर्जा हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति में भी मौजूद है, ही सींची हुई है। हर व्यक्ति वही ऊर्जा है, हर परिस्थिति वही ऊर्जा है, हर वस्तु भी वही ऊर्जा है। और ये नजरिया अगर हमने अपना लिया जीवन में, तो हर पल में ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हर पल में पॉसिबल है। So not just this song. So this song you can use simply as an example कि अरे मैंने आज तक तो ऐसा नहीं सोचा और अब आज इतना अच्छा लग रहा है। तो यही बात आप हर व्यक्ति को अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ में जो भी आपके सामने है, जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, हर चीज में अरे मैंने तो नहीं सोचा कि ये जो देवत्व है जो मैं अपने आप में अनुभव कर रहा हूं, वो हर व्यक्ति में है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो नाम से। Then the whole life will change. That is the way. That is the way forward. Make it happen. So ये गाने गाते हैं, समझाता हूं, it is only to reach this place where we start to expand this idea to everything. Everything, everybody, every person, every place, every moment. हवा भी है रवा रवा, ये हवा रवा रवा ही है हर पल में, जहां भी जाते हैं, एनीवेयर एनीवेयर। आप धारावी चले जाओ या 5 स्टार में चला जाओ, हवा रवा रवा है अगर आपकी आंखें खुली है। ब्यूटिफुल। सो लेट्स मूव इन दैट डायरेक्शन एंड बी देयर, स्टे देयर, एस्टैब्लिश आवरसेल्फ देयर। जो हमारी असली जगह है वहां जाके जिए हम। सिर्फ बातों से अब बहुत हो गया। हाँ अरुण। यस पुरुषोत्तम जी, आपको कुछ हाँ कहना पुरुषोत्तम जी, हाँ पुरुषोत्तम जी बोलिए। वाह संजय जी, अभी वो मात्रे जी की एक सेंटेंस याद आ गया मेरा। अच्छा, संजय जी, योर वेज आर योर वेज, योर वेज आर योर वेज। वाह, इस ढंग से आपने मतलब जो हमेशा हम मतलब हर स्पिरिचुअल व्यक्ति का या हर प्लेटफॉर्म पे यही कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन Right. आपने जिस ढंग से उसको इतना काव्यात्मक बोलो या इतना म्यूजिकल वे में और इतना इमोशनल वे में इतने डेप्थ तक ले गए उसके कि हर पल में जीना क्यों, कैसे और कैसे जी सकते हो, क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत ही मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपने 1-1.5 घंटे के इसमें पोएटिक वे से पूरा जैसे का सार निचोड़ याद है। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच, लव यू। मोस्ट वेलकम, लव यू लव यू। जय गुरुदेव संजीव जी। हाँ जय गुरुदेव। I was sung in your songs. I was enthralled. हाँ Your song, right. classical, sad song. I forgot myself. Just now Beautiful. you said air contains 21% of oxygen. Yes, you will find 21% oxygen in Dharavi as well as in Antilia. There is no difference in air. Content of oxygen is the same everywhere, all over the world. So we take it as air. We are neither poor nor rich. We are on the edge of our social status of life. Correct. That's it. Jai Gurudev. Beautiful, beautiful, beautiful. जो एक है उसी को देखते जाएं, उसी को समझते जाएं। Great. Let me play a small part of that song which Lopa sang. The same song, I found it now. Let's see. I hope you can hear it. सुनाई दे रहा है? Not yet. Yes. Yes. सुनाई दे रहा है। Yes, we can hear. Okay, okay. Yes, we can hear.
जवां हवा भी है रवां रवां सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां फजा भी है जवां जवां का हरेक हरेक पल चला हरेक पल को ढूंढता हरेक पल चला गया हरेक पल फिराक का हरेक पल विसाल का हरेक पल गुजर गया बना के दिल पे एक निशान सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां फजा भी है जवां जवां Great. Wow, that was awesome. And Yeah, that's my sister Lopa. So we just recorded that. Great. है सारी family multi-talented है. I know. And Lopa, in fact, she's also a dancer. She's a Bharatnatyam exponent and she's done her Arangetram and all that. And recently she started painting and I'm just blown away by the kind of painting she has done. It's amazing. So वो तो multi-talented है हमारी. It's beautiful. So, Like brother, like sister. yeah, and I think ultimately everyone is an artist in the canvas of their life. Each one is a writer, each one is the author. What is that? There's a famous quote, something about I am the author of my road, I am the something of my destiny. What is it? Niyati Meno. I am the master of my, I am the author of my something. I'm the master. Three things you Can are mixing it up. I'm creator of my own destiny. Yeah. नहीं, Who is trying to say something something? else. Yeah, yes दीपा Deepa. Yeah, Yeah. Wait. आगे का चैप्टर क्या है वो मुझे पता है क्योंकि ऑथर कौन है वो मुझे पता है. Correct. Who is this? Who is speaking? दीपा. Deepa. Where? इधर मेरे को. हाँ, Deepa. She's spotlighted. Yeah. Okay. Great. Yeah, you're right. Yeah, the quote I was trying to remember was is by somebody, William Ernest Henley. Yeah. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Something like that. So yeah, beautiful. Natisha, you want to share something or ask something? No, it's so wonderful to have you after such a long time. और मैं Yeah. सुबह से इंतजार कर रही थी कि मैं अच्छा. आपका गाने सुनूंगी, आपको सुनूंगी और Sure. मेरा Zoom का लॉगिन ही नहीं हो रहा था. अच्छा. I logged in at 9 o'clock. Oh So I wow. was like, let it be. जब जो है सो है. जो है सो है. But fortunately they are recording this, so eventually you can hear the recording. हाँ, आपके आखिरी जो कुछ पल सुने वो भी बहुत है. जरूर. Thank you so much. हाँ, पर 6:55 लॉगिन में तो ST लिखना पड़ेगा. पता नहीं क्या हुआ, वो Zoom में लॉगिन ही नहीं हुआ. एरर पे एरर. ST. It's okay. Thank you, Natisha. So just one more kirtan before we close. I'll log off in a few minutes and then I think you have a special guest, Meena. You can spend a little time with her. We have to do a detailed essay or video essay and then also. special guest. Yeah. At what time? We were supposed to close by 9 and from 9:15 to 9:30. So no problem. Just go with the flow. Okay.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Please go on mute. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wonderful, wonderful, wonderful. Superb. It was really Great. awesome. Thank you all, and look forward to being with you all again, either on Zoom or in person, at Kirtan or at the courses, Scope Camp or BST or anywhere in the real space. Virtual space में तो हम है ही साथ में. Lots of love to you all. Thank you, thank you, thank you, thank you.